welcome back to my channel. मैं हूँ मिस Zeby. I hope you guys are doing great. Well, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ how to curl your hair using a hair straightener. So come on, without any delay, let's get started. Well, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक हेयर स्ट्रेटनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेबीलिस कंपनी का, लेकिन आप कोई भी अच्छी सी कंपनी का, अच्छे से ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं. समथिंग लाइक बेबीलिस, रेमिंगटन, ब्रॉन एंड देयर इज आइकॉनिक. देयर आर मेनी कंपनीज. तो आपको जो पसंद आए आप यूज़ कर सकते हैं, बस उसका पावर अच्छा होना चाहिए. देन नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू यूज़ अ हीट प्रोटेक्टर या फिर आप यूज़ कर सकते हो एक हेयर सीरम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम गेटिंग डैमेज. वेल गाइस, सो एज यू कैन सी मैंने अपने हेयर ऑलरेडी सेट कर चुके हैं. मतलब थोड़ी सी मैंने ऊपर से स्ट्रेटनिंग की है. आप भी ये कर सकते हो. एंड उसके बाद यू कैन टेक अ हेयर स्ट्रेटनर एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई कर्ल माई हेयर यूजिंग अ हेयर स्ट्रेटनर. These amazing soft curls just by using a hair straightener. You can also try this at home. And अगर आपको hair mousse and hair setting spray नहीं यूज़ करना है, so that is optional. अगर आपको proper set look दिखनी है आपके curls की तो आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन उसके अलावा a hair serum and a heat protector is very necessary. And of course एक hair straightener तो बहुत important है. Well, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे लगे आपको मेरे soft curls, and what else would you like to see me doing in my videos? Please let me know in the comment section and make sure कि आप मेरे चैनल में Zeby को सब्सक्राइब करना ना भूलें. I'll see you in my next video. Until then, bye bye and see ya.